So hi, good afternoon. So I'm taking right now a video clip of something cool from my collection, and the craziest part is from last 1 year I never rode my bike, and let's see will it start or not. And you can see here there is another bike of mine, and this is my bike. So ये वाला बाइक मैंने खरीदा था 2020 को, और फ्रॉम लास्ट 1 year इसको मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है. फ्रॉम लाइक जनवरी मंथ, यू कैन से जनवरी मंथ से मैंने ये बाइक स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग सीन ही कुछ अलग है, या ट्रैवलिंग ही बहुत कर रहा था, तो दैट्स वाई मुझे वो टाइम में नहीं मिल रहा था इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको पैम्पर करने के लिए. लेकिन अभी मैं क्रेजीस्ट पार्ट बताने वाला हूँ, वो है मैं ऑल असम राइड करने वाला हूँ इसी बाइक में. सो लेट्स बिल्ड द बाइक एंड लेट्स सी विल इट स्टार्ट और नॉट. अभी तो भगवान के भरोसे हूँ, गाड़ी बाइक का चाबी इधर है, अभी देखता हूँ ये स्टार्ट होता है कि नहीं. लेकिन लेट्स बिल्ड दिस बाइक एंड टुमारो आई विल बी हेडिंग टुवर्ड्स Dibrugarh, and all over Assam ride will be continuing in this bike. So let's see will it start or not. So let's see will it start or not. So lot of pampering required. Will it start? Okay. So battery is down, I think. So that's my bad luck. So let's build this bike. क्या अभी कर चाहता है, क्या नहीं, वो देखता हूँ. टायर तो फुल्ली अपसाइड और आगे पीछे का तो दोनों टायर ही पूरा खाली है. इंजन ऑयल तो चेंज करना ही पड़ेगा, साथ में शायद बैटरी भी जा सकता है, तो बैटरी का भी खर्चा आएगा. तो लेट्स बिल्ड दिस बाइक. तो राइट नाउ द क्विक अपडेट ऑफ माई बाइक. सो मैंने अभी इसमें चेंज किया है मोबिल, जो मैंने यूज़ किया है कैस्ट्रोल पावर क्रूज, जो अल्टीमेटली मैं लास्ट 3 years से ये यूज़ कर रहा हूँ. एंड कैस्ट्रोल वॉज द बेस्ट like synthetic oil for your bike, and from last 3 years I used this particular like variant for my bike, and everything is fine. and मैं बैटरी चेंज करना पड़ा इसका, तो अभी इसका टायर चेक करेंगे आगे जाके. तो बाइक तो अभी कम्प्लीटली रेडी है, यू कैन सी देयर. तो बाइक इज कम्प्लीटली रेडी नाउ फॉर द ऑल असम ट्रिप. सो लेट्स सेलिब्रेट द हैप्पीनेस ऑफ द लाइक, कैसे बताऊँ, like you can see the smile brings me. Okay, so now I can ride my bike, and tomorrow I'll heading towards Dibrugarh and Lakhimpur, and after that I'll taking this bike for Guwahati. So let's continue the vlog. Right now, after building the bike, taking all the stuff from my bike, now I am came for the washing center, and now she is looking busy for sure. So let's continue the vlog, and from tomorrow I'll be vlogging. Almost after 3 years I will be vlogging in my channel. So let's see the ride, let's enjoy the ride, and let's enjoy the whole enthusiasm about my life through bikes and cars. I completely built the bike. So ये गैरेज में खड़ी थी लास्ट 1 year से. तो आज इसका कम्प्लीटली इंजन चेकअप हुआ, कम्प्लीटली वो जो चेंज करना पड़ा मोबिल चेंज किया, उसके बाद बैटरी कम्प्लीटली नया डाला, उसके बाद टायर तो ऑब्वियसली गुड इन कंडीशन है. एंड फ्रॉम टुमारो आई एल हेडिंग टुवर्ड्स गुवाहाटी, एंड आई विल बी लाइक एंटी क्लॉकवाइज आई विल बी ट्रैवलिंग इन दिस बाइक फॉर द ऑल असम राइड. एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर यू कैन से आफ्टर 3 years आई एम स्टार्टिंग दिस vlogging channel, and I'll be upload a new video throughout my journey. And in my collection right now I have Glamour, Avenger and Yosen. You will be like notified after this vlog, and in my channel you will be amazed with the video with my enthusiasm through bikes and cars. And so let's celebrate with a new video in the next tomorrow I'll heading
towards Lakhimpur and Dibrugarh also. So after that, I'll show you the whole journey of my first All Assam ride. So like this video.